Good morning, children. Today we are going to do the practice exercise of your English textbook. These are very important exercises because questions do come from the practice exercise every year. Okay, so here this is page number 29, practice exercises. They are mostly grammar exercises and they are quite important. Okay, so please take them seriously and complete the exercises in your textbooks, and later on I shall ask you to submit your books so that I can correct them. Okay, see, first one is read the passage given below and answer the questions that follow. You might have done comprehensions before. Okay, so this is seen passage. Seen passage means this very passage is from your chapter only, Salu Marda Timaka. Okay, from the same chapter only it is, the passage has been given, extraction has been given, and you will have to read the passage first of all. Okay, so what is the actual trick of doing comprehension? First of all, you have to read the passage very carefully, then a few questions are given below, you will have to answer them. Okay, so here is the passage. If you read the passage carefully, you will get the answers. Okay, so first one I am just telling you one or two, you can do the other ones. Okay, choose the correct alternatives in the each of the following. Okay, as you have read the passage already, you can easily make out which are the answers. Okay, Salu Marda Timaka was not involved in, which work she was not involved in, कौन सा काम उन्होंने नहीं किया. Planting trees she did, storing rainwater she did, building a hospital she did, but teaching at school she did not do. She was not a teacher, she was an illiterate woman, as I have already told you. Okay, so this is the correct option. Timaka set up a trust for planting trees, building a hospital, cleaning up her village, making poster. Which is the correct answer? Building a hospital. She set up a trust for building hospital, not for planting trees or doing any other work. Okay, so the rest you will do. The next one is complete the following sentences. Second question, second exercise. Timaka still lives in, where she lives? She lives in economic crisis and just manages. See here, here is the answer, economic crisis, and just manages to somehow make a living from the various awards and a monthly pension. So this is the complete answer of this statement. Okay, so you will have to complete the statement. You do it on your own. Okay, she has passion for dash, she has philosophy of life, that is dash. Okay, so do it on your own in your textbook only. Okay, don't fail to do it, I shall correct your textbook. Is that clear? Then the next exercise is page number 30. Annual means once in a year. You know, I might be knowing annual का मतलब क्या होता है, जो साल में एक बार होता है. It is also called yearly, you know that. Okay, now here one word has you have to give one word for the following phrases here. Once in a month, once in a month, monthly. Once in a week, weekly. Once in a day, daily. Okay, every day, daily. So ये इन सबको क्या बोलते हैं? Monthly, weekly, daily. These are one words for these given phrases. Okay, now pick out the words related to the root word given below from the passage given above. Okay, root word has been given, you will have to find out from the passage. Passage में से तुमको ढूंढना है. Act लिखा है root word, उसका word क्या है, actual word जो वहाँ पे लिखा है active. Okay, you can find out from the passage. Passage पढ़ो और इन words को ढूंढो. ये root word है, these are root words, और उसके साथ कुछ prefix और suffix मिलाकर उसको दूसरा वर्ड बनाया गया एक्टिव, एंड दीज वर्ड्स आर अवेलेबल इन द पैसेज, सो यू विल हैव टू फाइंड आउट, तुमको ढूंढना है. ठीक है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का वर्ड है कंस्ट्रक्शन. इन द सेम वे इकोनॉमी, मंथ, सोसाइटी, ह्यूमन. यू फाइंड इट ऑन योर ओन. इफ यू कांट फाइंड इट, आस्क मी, आई विल टेल यू. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द कॉमनली यूज लेटर्स यूज टू स्पेल साउंड FR, FF, PH, F and GH. ओके, द फर्स्ट वन द वर्ड अफेयर, फॉरेस्ट. ओके, सो एफ जो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम लोग क्या, FF से भी का भी प्रोनाउंसिएशन पफ, कॉफ़ी, ठीक है, टॉफ़ी, तो उसके लिए एफ का प्रोनाउंसिएशन हम डबल एफ से भी करते हैं, PH से भी करते हैं. फोन, यू से फोन, PHONE इज फोन, वो एफ का प्रोनाउंसिएशन है. देन एफ तो करते ही हैं, देन GF और GH ऑल्सो इज समटाइम्स प्रोनाउंस्ड एज एफ, जैसे कि रफ, टफ, उसमें GH होता है, ROUGH, TOUGH. Okay, so GH also is pronounced as F. Okay, like words like affair, forest, phone, cuff. Okay, these are the words where we have used FF, only F, PH and GH. All these four types are used for pronunciation of F only. सिर्फ F का pronunciation के लिए ही है, समझ रहे हो. Now complete the following words given below.
the blank, you have to complete the words given below with ph, g, gh, also add few more words in of each type. ठीक है, ph, gh से यहाँ पे fill करना है. See, afforestation. ठीक है, so what was the pronunciation of afforestation? AFF. Afforestation, preserving forest. The meaning is preserving forest. You have, yeah, hints are given, you have to complete the words. A picture, photograph, PHO. Okay, concerning body, physical. A public event, fair. Okay, large number of vehicles, traffic. Then without personal interest, selfless. I had told the meaning of selfless also. What is the meaning of selfless? Okay, in the same way now you have to add up few more words with PH, जैसे graph, photo, physical. ठीक है, और 2-3 words ढूंढो, find out from the dictionary and write here. In the same way, FF with the letters FF, you have made one word here, toffee. Another word is coffee. I have given you another word. Now you find out few more words. Okay, foreign, fair. F से तो found कर ही सकते हैं, it's easy. Then with GH, cuff, rough, cuff, tough. Okay, F का pronunciation होना चाहिए, समझ रहे हो? So with GH you will have to find more words. Is that clear, children? Now come to the next exercise, page number 31. This is a poem. Okay, this is also a comprehension, but it is unseen comprehension. Unseen means ये तुमने पहले नहीं देखा है, ये तुम्हारे बुक में नहीं है. पहले जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज था, जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन था, it was there already in your book. That's why it was seen passage, and this is unseen passage. Okay, read the poem carefully. My tree. Okay, oh tree so big and stout and strong, you have lived so very very long, 100 years or more I am told, and yet you are not so very old. Okay, ट्री के बारे में कहा गया है. ओ ट्री सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग. ओ ट्री तुम कैसे हो? यू आर सो बिग, यू आर सो स्टाउट, यू आर सो स्ट्रॉन्ग. ओके, तुम कैसे हो? यू आर वेरी बिग. स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है फैट, जिसका ट्रंक बहुत मोटा होता है ना, उसको स्टाउट बोलते हैं. ओके, देन स्ट्रॉन्ग, यू नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग, ताकतवर. ठीक है, देन यू आर लिव्ड, यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग, तुमने बहुत साल जिया है. यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग, दैट मीन्स तुमने बहुत साल जिया है. यू हैव लिव्ड वेरी वेरी लॉन्ग ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स यू हैव लिव्ड. ओके, 100 years or more I am told, तुम 100 years से भी ज़्यादा हो. एंड आई एम टोल्ड दैट, मतलब मेरे पेरेंट्स ने या मुझे किसी ने बताया है कि तुम कितने साल के हो. 100 years और मोर देन दैट, 100 years या उससे भी ज़्यादा के हो. यू कैन सी द ट्री. ओके, देन एंड येट यू हैव नॉट सो वेरी ओल्ड, लेकिन फिर भी तुम अभी ओल्ड नहीं हुए हो. इसका मतलब तुम और कितने साल जियोगे. ओके, तुम बहुत सारे साल और जियोगे. ट्री कैन लिव for more than 100 or 200 years. Some trees are about 300-400 years also, banyan trees. Okay, so here also it is a tree, and the child is talking to the tree, and he says that you are very old, about 100 years or so or more than that, and you are going to still be living for many more years. You are not so very old. तुम अभी भी उतने old नहीं हुए हो. इसका मतलब तुम और जिंदा रहोगे बहुत सालों तक. Okay, 100 secrets you could tell of children whom you love so well. You came, who came and sat beneath your shade or underneath your branches played. Okay, 100 secrets you could tell. तुम hundreds of secrets बता सकते हो. किसके? Of children whom you love so well. तो उन बच्चों के जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, तुम्हारे आसपास आकर खेलते हैं, तुमसे बातें करते हैं. उन बच्चों से तुम बहुत प्यार करते हो, तो तुम उनके बहुत सारे सीक्रेट्स जानते हो. ओके, who came and sat beneath your shade, वो आए हैं तुम्हारे पास, तो बैठे हैं कहाँ पर? तुम्हारे शेड पे, मतलब तुम्हारी जो छाव है उस पर वो बैठे हैं. दे केम एंड शेड बीनीथ योर शेड. इतने सालों से तुम बहुत सारे बच्चे आए हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे शेड पे बैठे हैं. और अंडरनीथ योर ब्रांचेस प्लेड, और तुम्हारे ब्रांचेस के नीचे खेले भी हैं. अंडरनीथ मीन्स अंडर द ब्रांचेस. ओके, सो अंडरनीथ योर ब्रांचेस दे हैव प्लेड ऑल्सो, एंड दे हैव सैट ऑन योर शेड. वो शेड में भी बैठे हैं तुम्हारे, और बहुत सारे, तो जब वो खेल रहे हैं तो बहुत सारे सीक्रेट्स भी शेयर कर रहे हैं ना, बहुत सारी बातें कर रहे हैं तुमसे, आपस में बातें कर रहे हैं, तो तुम सुन सकते हो. ओके, सो यू नो हंड्रेड्स ऑफ सीक्रेट्स, उनके बारे में तुम बहुत सारे सीक्रेट्स, हंड्रेड्स ऑफ सीक्रेट्स जानते हो. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर हियर. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. ओके, अंडरनीथ द ब्रांचेस, दे आर प्लेइंग ऑन द ब्रांचेस, they are talking to the tree. Okay, as you can see.